नमस्कार आपण समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। आज यह वीडियो में आप सहित अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स डिस्कस द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शेयर करी आ वीडियो आगे को कहबी जे आपण मैंने यार पीडीएफ नोट्स को किपरि भाबे पाई परिबे। तो चलतु स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट टाइम देखिबा द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एट द हार्ट ऑफ कंटेम्पोरारी पॉलिटिकल साइंस एंड इट ए फील्ड ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन ऑल दी कंट्रीज। कौन ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम पढ़ते से हार्ट ऑफ कंटेम्पोरारी पॉलिटिकल साइंस हार्ट काम करे ता सहित कंपैरेटिव पॉलिटिक्स गोटे कौन ग्रोइंग गोटे फील्ड जो कि कौन ग्रोइंग होची आउ सब प्रत्येक कंट्री केवल गोटे कंट्री नुह प्रत्येक कंट्री ये गोटे कौन ग्रोइंग गोटे फील्ड गोटे कहि परिबा। नेक्स्ट देखिबा द स्टोरी ऑफ द वार पॉलिटिक्स बिगेन द पोलिस द सिटी स्टेट कम्युनिटी ऑफ एंशिएंट ग्रीस। जो पोलिस वार्डटा से कौन होती ना पॉलिटिकल जो साइंस जो कहते पॉलिटिक्स से कौन पुलिस राशि अच्छी तार अर्थ हो सिटी स्टेट से कौट आसी ना एंशिएंट ग्रीस राशि अच्छी प्लाटो एरिस्टोटल एंड मेनी ऑफ देयर कंटेम्पोरारीज रिगार्डेड पॉलिटिक्स एज द अफेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स। माने एरिस्टोटल प्लाटो आउ तांको समसामयिक गुड़ाए जो थिले पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने बा फिलोसफी हम कहि परिबा से माने कौन पॉलिटिक्स एज द अफेयर ऑफ पॉलिस माने पॉलिस सिटी स्टेट रो जो सब अफेयर को पॉलिटिक्स कहुए बोली से कहते। नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ कंटेम्पोरारी पॉलिटिक्स। कंटेम्पोरारी पॉलिटिक्स रो मीनिंग कौन ना कंटेम्पोरारी पॉलिटिक्स इज कंसर्न विथ बिहेवियर इंस्टीट्यूशन प्रोसेस आइडियाज एंड वैल्यूज प्रेजेंट इन द मोर देन वन कंट्री। कौन कर कंटेम्पोरारी पॉलिटिक्स से कौन ना बिहेवियर व्यवहारिक इंस्टीट्यूशन संस्था प्रोसेस माने कार्यक्रम किपर कौन हो आइडिया एंड वैल्यूज प्रेजेंट इन द मोर देन वन कंट्री। Comparative politics studies a broader range of political activity including governments and their institutions as well other forms of organization and directly related to national government and example देखिबा कौन अच्छी ना ट्राइब्स कम्युनिटी एसोसिएशन यूनियन ये सब को कंटेम्पोरारी कौन स्टडी करे। सम पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर गिवन बिलो किछि निम्न दिया गला किछि कौन संज्ञा। तो संज्ञा देखिबा दि तीनटा according to John Blondell comparative politics is the study of the politics of national governments in the contemporary world। जॉन ब्लॉन्ड कौन कहले ना comparative politics गोटे स्टडी ऑफ नेशन एंड नेशनल गवर्नमेंट राष्ट्र और राष्ट्र सरकार तांग सहित आ कौन ना कंटेम्पोरारी वर्ल्ड बर्तमान वर्ल्ड सहित गोटे स्टडी करे सी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नेक्स्ट एम.जी. स्मिथ को हिसाब से डिस्क्राइब कले जे comparative politics is the study of the forms of a political organization, their properties, correlation, variation and model of the modes of the change। Next E.A. Freeman कौन कहले ना E.A. Freeman stated that comparative politics is the comparative analysis of various forms of government and diverse of political instruments। various form सब सरकार किपर सब फॉर्म रही आ तार डाइवर्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट सब संस्था मानकर किपर कोन विभक्तिकरण कर दै से ये फ्रीमैन कहले। नेक्स्ट देखिबा नेचर। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेचर कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा आसे। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज फैक्टमोल only when the understood for the main characteristic and significance of comparative politics by government। So although the two terms of comparative politics and comparative governments are used lightly and interchangeably, there is a distinction between them। तांग मध्य किछि सामंजस्य अछि पेसिमिलम कहि परबा। comparative politics stands analytical as comparative government। नेक्स्ट देखिबा कंपैरेटिव गवर्नमेंट इंक्लूड्स जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट अच्छी से कौन कौन आसी ना इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फीचर्स एंड लीगल पावर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग इन वेरियस स्टेट्स। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट आर मेंशन बिलो किसी जो कौन किसी कैरेक्टरिस्टिक बर्तमान देखिबा कंपैरेटिव गवर्नमेंट रो। तो फर्स्ट होची स्ट्रेस अपॉन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, focus on the study of major constitutions of the world। Next emphasize upon the study of power and functions of various political institutions working in the different countries। next देखिबा formal study of organization and powers of features of the constitution in the political institutions to devise a theory of ideal political institution has been the objective। next एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल रिसर्च सब कौन एनालिटिकल में कौन भल देखा रिसर्च करवा। नेक्स्ट
Objective study of politics, a value free impartial study. It reject normative described methods of a contemporary government. Next, study of infrastructure of politics. Politics कौन जो infrastructure जो होची तार किपरि स्टडी करबा. Analyze the behavior of individual behavior कौन ताकू analyze करबा. Group structures, sub systems and sub system in relation to environment. सिस्टम सहित इन्वायरमेंट रिलेशन कौन अच्छी. इट स्टडीज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट मैंने कौन जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्सटा गोटे प्रकृत में कौन कार कौन बिहेवियर को सी एक्चुअली स्टडी करे प्रत्येक इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी फोकस. कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स फोकस इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इट स्टडीज पॉलिटिकल प्रोसेस इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. मैंने कौन विकसित राष्ट्र सहित विकसनमुखी राष्ट्र मध्य सब स्टडी करे पॉलिटिकल प्रोसेस को. Theory building as the objective. The objective of competitive politics study is a scientific theory building. Next, consequently, competitive politics can be defined as the subject that comprise the political system in various parts of the globe with a view to comprehend and define the nature of politics and to devise a scientific theory of politics. मैंने कौन देखिले जो competitive politics can be define कर जोना ताकू the subject that compares मैंने कौन compare को तुलना कर पे कोठी ना political system सहित in various parts of the globe with a view to comprehend and define the nature of politics and to devise a scientific theory of politics. Next देखिबा स्कोप. तो बर्तमान स्कोप देखा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नेचर देखले बर्तमान स्कोप देखा परीक्षा अलग अलग क्वेश्चन आसे. कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स मीनिंग कौन नेचर कौन लेख ना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कहले कौन बुझ आ तार स्कोप तो ताको हिसाब लिखिए. द स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर. जो पॉलिटिकल पावर ताको पूरे सब्जेक्ट रे. द टर्म ऑफ पावर हैज बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट राइटर्स इन डिफरेंट वेज. माने कौन पावर ताको गुडे राइटर ताको हिसाब रे लिखिसंती. फॉर इंस्टेंस व्हाइल Carl J. Friedrich described it is a certain kind of a human relation. Friedrich कहते हैं एटा certain kind of human आम जो human relationship अच्छी तार कि certain kind माने किसी human relationship. Next देखिबा Downey regards it as the capacity of an individual. से कौन ना individual capacity को regard कर देले और a group of individual to modify the conduct of the other individual or groups in the manner which he desires. माने कौन निज हिसाब से ग्रुप को मॉडिफाई कर परियो और से निजर इंडिविजुअल कैपेसिटी दे देले टाउनी. नेक्स्ट लास्वेल कौन कहले ना लास्वेल को हिसाब लास्वेल सेज द मेकिंग ऑफ डिसीजन इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस. द पॉलिसीज व्हिच अदर पर्सन्स आर प्रेशर pursue are what is decided upon. मैंने कौन लास्वेल कहता मेकिंग ऑफ डिसीजन इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस. मैंने कौन डिसीजन जो नौछना गोटे इंटरपर्सनल प्रोसेस गोटे जो डिसीजन आम नौछंती. द पॉलिसीज व्हिच अदर पर्सन्स आर टू pursue are what is decided upon. Power such participation in the making of decisions is an interpersonal relation. Politics is connotes a special case in the exercise of power and excess of the power and excess in the attempt to change the conduct of others in one's own direction. Next देखिबा competitive politics is a study of the subject of politics from the standpoint of power. माने कौन पावर को सी देखे standpoint देखे that has the winded the scope of competitive politics so as the include a study of the infrastructure of the political system. जो study infrastructure political system study गोटे देखिले it is an account of this that politics गोटे politics account बोले कौन सब जहाँ ला कौन accountable हम रहउछंती. Next देखिबा cannot be studied properly with identified by ruling class or the government and non-government elites and measuring their respective roles. ଆଉ कौन अच्छी ना politics also functions by and large within groups. Though as we have seen early, however important themselves in group may be, neither the individual nor the society can be left out. The subject of authority becomes the hand made of power. हाथ made power. Thus it becomes it becomes a celebrated principle of competitive politics, where consensus is weak, cohesion tends to be strong, and vice versa. It is an account of these important conditions that the term politics has to claim its peculiar definition in the realm of competitive politics. The result is that is not merely a study of state and government. मैंने रिजल्ट हम देख लीजिए पूरा मेनली सहित कौन सी स्टेट सहित कि कौन सी गवर्नमेंट सहित स्टडी करनी.
इट इज ए स्टडी ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ पावर मैंने कौन प्रकृत में है मैंने पावरटा किपर भाव एक्सरसाइज हो मैंने कार्यकारी होची ताहार स्टडी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स मैंने ताहा ऊपर से अध्ययन करे या कौन स्टेट कि सरकार ऊपर देखनी आरो कहे सीधा सीधा कह गले इट इज ए स्टडी ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर स्टडी तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट आम देखा डिस्कस द ट्रेडिशनल अप्रोचेस इन द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो थी कि आम देखा फिलोसॉफिकल अप्रोच कौन हिस्टोरिकल अप्रोच कौन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कौन तो ये आम सब नेक्स्ट वीडियो में आप लंग क्वेश्चन डिस्कसन करी जदि आप नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देती सेठार जॉइन हूँ आपण मानक यार नोट्स मिल जाए थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।